सर इसमें मार्जिन्स में बात करेंगे कि ईपीसी बिजनेस में कितने मार्जिन्स रहते हैं और आपके ऑटोमेशन में क्या मार्जिन्स रहते हैं सर, क्योंकि आप बाहर इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है आपके जी। गिव अस एन आइडिया हाउ मच इज़ योर डोमेस्टिक सेल्स एंड हाउ मच सेल्स कम्स फ्रॉम आउटसाइड। अब थोड़ा ऑर्डर बुक की बात करेंगे क्योंकि एज आप ईपीसी बिजनेस में हैं तो ऑर्डर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच इज़ द ऑर्डर बुक? नमस्कार दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटका से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं लीपफ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में, जो कि बहुत जल्द आईपीओ लेके आने वाली है। हम आज मिलेंगे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रभव राव जी से और जानेंगे उनके बिजनेस के बारे में। इससे पहले कि मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करूं, एक ज़रूरी सूचना, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़। दोस्तों स्टॉकनॉक्स का एआई इनेबल्ड एप्लीकेशन अब प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में लाइव है, प्लीज़ उसे डाउनलोड कीजिए और एआई के मदद से आप अपना इक्विटी रिसर्च को और इजी बनाइए। तो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर विष्णु जी। First of all, welcome to Bangalore. Thank you so much. Thank you. Especially in Leapfrog Engineering Services. It's my honor and pleasure to welcome you over here. Pleasure is all mine, sir. Thank you so much. First of all, congratulations on filing the DRHP. Thank you. And as I know, you have received the approval also. Right. And your IPO is coming soon. That's right. So sir, पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट इससे ही करते हैं कि आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए, ताकि हमारे दर्शकों को और आपके होने वाले इन्वेस्टर्स को ये पता रहे कि आप क्या करते हैं। Leapfrog Engineering Services is about 20-year-old company. Okay. Our primary objective was to bring a design-build solution under one roof. The primary objective, like I said, is to bring the entire solution under one roof. What started off as a pure services company in 2005 as a dominant electrical player, today in 20 years, Leapfrog Engineering Services is a name to reckon with in the EPC space. So when I say EPC space, is a complete design build solutions that we offer in various domains, right from electrical, instrumentation, industrial automation, modular substations, and now very recently we have started the robotics section. So the sum and substance of the entire thing is, if you are setting up any industry, process industry or any large industry, you can bank on a company like Leapfrog Engineering, which offers a complete end-to-end solution, right from the design to the end commissioning of the entire process. So that is what we offer in a very, very nutshell, if I can say, that this is the process that we offer. ठीक है. So what I understood, sir, is that you provide an integrated process and everything is available under one roof. One roof. So we have many EPC companies. If I have to ask you कि आपका differentiator क्या है, क्यों आप सबसे अलग है, तो आप क्या बोलेंगे? So I would say the engineering capability is one very big differentiator, and the second differentiator is all these engineering services coming under one roof. Now, if you historically see the EPC space, you will find specialized EPC companies in, let us say, electrical space or mechanical space or piping space or automation space. Very rarely you will find companies which has the capabilities of executing all these services under one roof. And that is a very, very important aspect, an underlying factor for us getting the jobs in the EPC space as an integrated engineering company. Okay. So when you say engineering capabilities, how does your experience helps in this?
आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी बताइए। Sure. See, my background is I'm an electrical engineer. I graduated way back in 1991, and immediately after completing my engineering, I did my MTech in electrical engineering. Thereafter, I got an opportunity to join one of the largest engineering companies of those days, Crompton Greaves. And later, after having worked there for about a couple of years in the technology division, which I was a part of, I got an opportunity to join GE in Bangalore. GE had just opened up its doors in India, and they were into multiple businesses. I got an opportunity to work in their projects division for about 8 years, and the knowledge and the experience that I gained in the projects is helping you here today. Is definitely helping us. GE, the management style, the engineering capabilities, it did give us a lot of confidence in starting something in the in the domain that I am in today. Since you jumped here, since you said about the different industries that you cater to in the EPC segment, I'll jump onto the financials and have a brief idea about each of the sectors that you cater to. Sure. So, आपका last year sales was around 138 crore. That's right. So, पहले ये हमको बताइए कि आपके ऑटोमेशन में कितना, इसमें से ऑटोमेशन कितना है और EPC कितना है? See, automation as a domain, हम लोग ने very recently we have introduced. ठीक है. It would be worthwhile to inform that we are one of the largest integrators for a large automation company called as Rockwell Automation. The association with Rockwell started about 2.5 years back. Today, roughly about 28 to 30% of our business comes from automation. ठीक है. I would not see automation as a standalone business, because all of our projects are complete integrated jobs. So when you see automation is one part of my total overall project value. ठीक है सर. इसमें मार्जिन्स में बात करेंगे कि EPC बिजनेस में कितने मार्जिन्स रहते हैं और आपके ऑटोमेशन में क्या मार्जिन्स रहते हैं? Typically, I mean, historically, if you see any EPC business, it ranges in the range of 15 to 20%. However, automation, because of the nature of the technology that is that we use, there's a lot of application-oriented things that go into. So usually, it is in the range of 35 to 40%. If it is in international jobs, the margins could be higher than 40%. So if you see blended or on a project to project basis, you can always safely say that 35 to 40% is the margin on automation business. So that is on the higher part, मतलब ज़्यादा मार्जिन उधर से आता है. जी. Going ahead क्या आपका composition automation का ज़्यादा रहेगा आपके business में? Going forward, that is the vision that we have. More on the technology side and less dependence on the labor-oriented commissioning side. So you will see a larger component of automation and robotics and those areas constituting more on the revenue side as far as our vision is concerned. सर आप काफ़ी इंडस्ट्रीज को कैटर करते हैं, ऑयल एंड गैस बीइंग द वन एक है, उसमें आपका फिर फूड इंडस्ट्री भी है, वाटर में भी करते हैं. थोड़ा हमें कुछ आइडिया देंगे बाइफर्केशन कितना परसेंट कौन सी इंडस्ट्री से आता है? मेजॉरिटी अभी हम लोग हमारा जो रेवेन्यू आता है ऑयल एंड गैस सेक्टर से आता है प्रिडोमिनेंटली, लेकिन हमारा फोकस अभी दूसरे एरियाज में भी है. अभी आप लास्ट 5 साल या 8 साल का हमारा कस्टमर बेस देखेंगे तो हम लोग एवरी सेक्टर को टच किए हैं. ओके, फूड प्रोसेस इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस, मेटल्स में तो हमारा बहुत अच्छा प्रेजेंस है, फार्मा, एंड नाउ वेरी रिसेंटली हम लोग we have started getting into the water segment, the desalination plants and the water distribution sectors. And the kind of inquiries that we have generated over the last 2 years in these domains gives us the confidence that going forward these will contribute a significant portion of our revenues going forward. क्योंकि आप बाहर से भी काम करते हैं, so you have exports, I mean international clients. जी. How much percentage is your domestic sales and how much is international? आप लास्ट 3 साल का हमारा फाइनेंशियल्स देखेंगे
So roughly about 80% of our business is coming from the international market. सर क्योंकि आप बाहर इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है आपके, जी. गिव अस एन आइडिया हाउ मच इज योर डोमेस्टिक सेल्स एंड हाउ मच सेल्स कम्स फ्रॉम आउटसाइड. जी. So if you see our last 3 years of financials, roughly about 80% is from the international business and 20% is from the domestic business. Going forward, the mix will be almost the same, 75-25 will be the mix. The reason is, now we are expanding in the other geographic locations abroad. Today we have projects in Bahrain, we have projects in Kuwait, we have projects in Oman, and very recently we have acquired one project in Abu Dhabi as well. So we feel that international market will contribute significantly to our top line as well as bottom line. Not to take away the fact that we will not focus on the domestic projects, but value-wise, the domestic projects will definitely go up because significant turnover is going to come from these two businesses. So we definitely are going to focus on the international markets going forward. Yeah. सर जब आप कुवैत बहरैन में बात करते हैं तो गिव अस एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर दीस. Okay. I would classify that into currently two sectors because these are predominant. I mean, Middle East is dominated by oil and gas. Yes. And also in certain sectors we are also very prominent in the water segment, the water distribution segment. There are some inquiries that we are working on in the metal space in the Middle East. So these are the three prominent sectors that we are highly focused on. ये आपको डायरेक्टली बिजनेस मिलता है और यू गेट इट सब कॉन्ट्रैक्टेड, कैसा होता है, हाउ इज द अरेंजमेंट? Generally, EPC business in Middle East is through a large EPC company. Okay. Usually we do not get orders directly. It is through the large EPCs, and we become their preferred subcontractors. ठीक है. So you are empaneled with them. We are all empaneled with them. ठीक है. सर अब थोड़ा ऑर्डर बुक की बात करेंगे क्योंकि एज आप EPC बिजनेस में हैं तो ऑर्डर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ मच इज द ऑर्डर बुक currently? If you ask me today, my total order book value-wise is about 370 crores. Okay. And what is the time period when you'll, how can you, कब तक execute कर देंगे? Yeah, so it ranges from about 9 months to 18 months, depending upon the size of the project. So आपके पास अगले 6-8 महीना, 1 महीने के 1 साल के लिए काम है काफ़ी? 2 साल के लिए काम है. हाँ. Because 372 crores will be segregated into next 2 years in terms of the execution. So we are well placed in terms of the order book for next 2 years. और इसमें कितना ऑटोमेशन से होगा और कितना आपका EPC का ऑर्डर्स है? That composition will remain almost the same. About 30%. Yeah, 30% would be automation. So there is a large concentration of few clients in the top 2, 3, 5. I mean, in terms of sale percentage. Right. आपका बिजनेस 2-3 क्लाइंट से बहुत ज़्यादा आता है. Correct. How are you planning to add more client or diversify this business? Yeah, it's a good question. Over last 8-9 months, there has been a conscious effort on the part of our team and our management to broad base our client base. ठीक है. We have added in last 6 months alone, we have added about 6 new clients, and these are really marquee labels in the oil and gas space as well as in the other sectors. To give you some examples, in the domestic space itself, we have added 4 large labels of really good customers, and in the international space, we have added 2 large customers. So now I'll touch little bit on the IPO that you are coming out with. कितने का issue लाना है sir, approx? So the total IPO size will be about 62 crores. And how are you planning to utilize that? I understand there is an offer for sale also. That's right. So out of this 62 crores, roughly about 5.5 crores is OFS portion. Correct. 27 odd crores is the capex portion. Balance will be for working capital and the general corporate purpose. What impact will these capex have on your top line and bottom line, and by when? Okay.
one immediate impact that we can see is our dependence on the other vendors will come down drastically. Number two, it will give us greater control on the deliveries. And third, the most important, it will improve our bottom line by about 150 to 200 basis points. So there is a negative cash flow. Yeah. Please throw some light on it. कि क्यों इतने negative cash flows है आपका और how do you plan to overcome it? See, the negative cash flow, if you see, it is transient. It is not over a period of time. EPC business by nature are highly cash intensive. Correct. It requires a lot of cash to execute the jobs. So you might see transient negative cash flows in between, but if you see the kind of projects that we have executed in last 2.5-3 years, some of the projects are of the size of 120 crores, one single order, and this is a testament that even a negative cash flow, if it's there on your books, you are able to execute large jobs. So there is a requirement for the working capital. There is always such huge requirement for the working capital. It is always there. So will this IPO solve this, because you are employing most of the fund in the capex, Right. and there is a portion for the general corporate purpose and also for the OFS. Correct. So you are left with very little fund for the working capital. That's right. See, to a large extent, it will solve the problems from the domestic projects point of view. Okay. My international jobs typically are structured in such a way that the payment terms will take care of the cash flow. It is the domestic projects where we require the working capital, and that's where we'll use the working capital for. Some of the IPO proceeds will be used to retire our the old debts, and the balance will be used for the business purpose. So in the last audited balance sheet, there is a huge portion, almost 80% of the current turnover, Right. is in the debtors. Right. And correspondingly, half of the money is in the creditors. Right. Around 50 crores. Right. What do you have to say on it? See, typically in the EPC business, most of the billing usually happens in the third and the fourth quarter. So that is the best quarter for you. That's the best quarter for us. I mean, any historical data that you take, not only of Leapfrog or any EPC company, typically the last 2 quarters is the best quarter. Some of the orders that we booked last year in the services domain were in the last quarter, and hence the execution of these projects happened in the last quarter. So you will see a little bit of anomaly over there. Understand. So the next question is related to the corporate governance part. Yeah. There is some related party transaction that we see in your books. Right. What kind of transactions are they? So if you see the RPT portion, it's a very small portion of that. Portion, yeah. So we have 2 entities, one which is basically called as Leapfrog Automation, which is generally, we use it for buying the components for our factory. So it's a very small component of that. And the other entity, which is Big Leap Ventures, is basically for the commissioning services. So when we execute a project, there is one commissioning portion where the manpower has to be deputed to do the commissioning of the equipment that we have supplied. So these two are very small portion. Usually on a per diem basis we charge to the customers. So it's a very small portion, insignificant I would say, of the total revenues that we. Do you have plans to merge it together or do the entire business in the Leapfrog? We certainly will do it maybe in about 1.5 years time. That is the plan that we have been advised to merge it or stop the RPT entities. Sir, we understand that you have a assembly unit. Yeah. जहाँ आप automation वाला जी. business आप automate मतलब assemble करके आप फिर सर्विस करते हैं. जी. Can you take us through the process? वहाँ पे क्या होता है? So
Vishnu ji, the best person to answer the entire process is my automation head, Mr. Bhaskar. Okay. He comes with a rich experience of about 35 years in this industry. Okay. I would request Bhaskar to take you through this entire process. So let's have a conversation. Sure. So Bhaskar sir, thank you for being with us. Sparing time. For joining us. Yeah. So I understand whatever I spoke with Prabhav sir, I understood that there is an assembly unit, manufacturing also, Yes. और आप एक ऑटोमेशन कंपोनेंट भी है आपके बिजनेस में। जी, जी। जब आप ईपीसी प्रोजेक्ट को या कोई काम करते हैं, जी। तो हमें थोड़ा ये पूरा प्रोसेस और कैसे टर्न की बेसिस पे आप प्रोजेक्ट्स को लेते हैं और एग्जीक्यूट करते जी। हैं और क्या वैल्यू एडिशन करते हैं, ये थोड़ा हमें बताइए। देखिए, मैं आपको कई सारे प्रोसेस के बारे में बता सकता हूँ। हाँ। टिपिकली मैं एक आयरन मेकिंग और स्टील मेकिंग के इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ। चलिए बताइए। देखिए, एक स्टील इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, हाँ। या सब प्लांट जिसे बोलते हैं। कस्टमर टिपिकली एक ब्लास्टनेस से एक हॉट मेटल निकलता है। तो ब्लास्ट कस्टमर मतलब वो स्टील प्लांट मैन्युफैक्चरर, स्टील प्लांट जिसका ओनर है, हाँ। वो जो है हॉट मेटल निकालता है। हॉट मेटल का बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका जो है वो ब्लास्ट फर्नेस रूट बोलते हैं। ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस के लिए जो 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 हॉट मेटल निकालने के लिए उसमें बेसिकली आयरन ओर और कोल चाहिए। ठीक है। सो आयरन और कोल देने के लिए उस ब्लास्ट फर्नेस के पीछे में कई सारे सब सेक्शंस रहते हैं। ठीक है। और वो सब सेक्शन अगर आप पीछे जाते रहेंगे तो माइंस तक जाते हैं। ठीक है। सो आप माइन से आप कोयला और आयरन ओर लाते हैं, और उसके बाद में जब प्लांट में लाते हैं उसका प्रोसेसिंग होता है। करेक्ट। उस प्रोसेसिंग में क्या होता है कि बड़ा बड़ा आयरन ओर वो सीधा ब्लास्ट फर्नेस को बेचते हैं प्रोसेस के लिए। बट जब माइनिंग करते हैं तो बड़ा बड़ा लम्स भी नहीं, उसके साथ में आपको फाइन्स भी मिलेगा। ठीक है। जो फाइन्स मिलता है उसमें भी आयरन है। हाँ। तो उसके लिए एक सब सेक्शन प्लांट्स है जिसको हम सेंट्रल प्लांट या पैलेट प्लांट बोलते हैं। ठीक है। दो सेपरेट सेक्शन है। ठीक है। वो दोनों जो है, सिंस इट इज आयरन ओर ओनली, वो दोनों भी ब्लास्ट फर्नेस को जाता है। ठीक है। उसके साथ में जब आप कोयला का माइनिंग करते हैं, हाँ। और जो कि ब्लास्ट फर्नेस को चाहिए, कोयला एज सच वो डायरेक्टली ब्लास्ट फर्नेस को नहीं बेच सकते हैं, बिकॉज वो देर में जलता है। ठीक है। इसलिए उसको एक कोक ओवन प्लांट में भेजते हैं। ठीक है। जहां से उसको थोड़ा जलाते हैं। ठीक है। रिच कोल हो जाता है, कोक हो जाता है, वो कोक जो है ब्लास्ट फर्नेस जाता है। ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि आपके पास एक ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस के पीछे में आपके पास सेंटर प्लांट है, पैलेट प्लांट है, कोक ओवन है। कोक ओवन के लिए जब आप माल देना है उसके लिए एक रॉ मेटेरियल हैंडलिंग सेक्शन रहेगा। रॉ मेटेरियल हैंडलिंग सेक्शन जो है माइन से माल लेके आता है। ठीक है। सो इस ये सारे प्रोसेसेस है, डिफरेंट स्टेजेस है। टिपिकली हर एक स्टील प्लांट में ये सब रहेगा। ठीक है। लीपफ्रॉग क्या रोल प्ले करता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि जब भी मैंने आपको ब्रॉडली प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस में उसमें कई सारे मशीन्स रहते हैं। ठीक है। कन्वेइंग इक्विपमेंट रहते हैं। ठीक है। वेइंग एंड बैचिंग सॉल्यूशंस रहते हैं। ठीक है। जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिकल रहेगा, उसके साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन रहेगा और ऑटोमेशन रहेगा। ठीक है। सो बेस्ड ऑन द प्रोसेस हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन हम पूरा करते हैं कस्टमर के मोटर को और इक्विपमेंट को पावर देने के लिए। ठीक है। प्रोसेस को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंटेशन देते हैं। ठीक है। बट ये दोनों को इंडिपेंडेंटली रन नहीं करेगा, बट इन दोनों को मैच करके प्रोसेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ऑटोमेशन भी देते हैं। ओके। सो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसके प्रोसेस के हिसाब से हम इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन करके सप्लाई करेंगे, उसका प्रोसेस का रिक्वायरमेंट का इंस्ट्रूमेंटेशन हम डिज़ाइन करके सप्लाई करेंगे। बट इन दोनों को चलाने के लिए ऑटोमेशन भी हमारा पार्ट ऑफ सोल्यूशन रहता है। ठीक है। ये सब चीज़ के लिए हमने जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से स्कीम बनाते हैं। स्कीम बनाने के बाद में जो खास तौर से ऑटोमेशन के लिए जो है, हाँ। जो प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है, ऑटोमेशन डिज़ाइन बनने के बाद में हम जो ऑटोमेशन कंपोनेंट लेके आते हैं और हमारे फैक्ट्री में उसको असेंबल करते हैं बेस्ड ऑन जो रिक्वायरमेंट। ठीक है। सिंगल सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम, ठीक है। टिपिकली डीसीएस रहता है। ये सब हम अपने ऑफिस में असेंबल करते हैं। ठीक है। हम उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी असेंबल करते हैं, जो कि मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज रहेगा, से लो वोल्टेज, ड्राइव्स, इंटेलिजेंट एनसीसी, सॉफ्ट आर्टर, ये सब हम अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके असेंबल करते हैं। ये करने के बाद में ये सब जब साइट पे जाता है, हम जो है उसका इंटीग्रेशन भी पार्टिसिपेट करते हैं। दैट मीन्स उसको इरेक्शन करने का,
उसको जो है फील्ड से इक्विपमेंट टर्मिनेट करने का, कनेक्शन करने का, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, हम ये तीनों को असेंबल करके प्लांट कस्टमर को चालू करके देते हैं। मतलब पूरा सब चीज को आप इंटीग्रेट कर देते हैं एक साथ। yes, इसमें एक पार्ट पे खाली हम डिस्कशन करेंगे। जी। जब एक कंपनी आयरन और या कोल माइनिंग कर रही है, जो स्टील प्लांट फिर बाद में जाके वो फर्नेस में डाल रही है, जी। तो वो माइनिंग स्टेज में आप क्या काम करते हैं वहाँ पे? देखिए उसमें क्या होता है कि जब आप माइनिंग करते हैं, हाँ, खास तौर से मान लीजिए फर्नेस को एक टाइप के, एक साइज ऑफ आयरन ओर ही चाहिए। हाँ, जब आप माइनिंग करते हैं तो आपको हर साइज का आयरन ओर मिलेगा, ठीक है, बड़ा बड़ा लम्स मिलेगा, जो कि फर्नेस को नहीं बेच सकते। ठीक है। तो टिपिकली वहाँ पे जो है कई सारे क्रशर रहते हैं, जो क्रशर रह के वो जो बड़ा बड़ा जो पीस होता है छोटा एक टिपिकल एक पर्टिकुलर साइज में ही लाना है। उसके बाद में जो साइज हो जाता है उसका भी अलग अलग होता है, ये बड़ा साइज, छोटा साइज और छोटा साइज, बिकॉज फर्नेस के लिए अलग अलग चीज कर, उसके लिए जितना भी जो इक्विपमेंट रहता है उसका इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन हम लोग करते हैं। ओके। उसके बाद में जब एक बार उसने पूरा का पूरा मेटल प्रिपरेशन कर दिया, वो जो है स्टील प्लांट को दो तरीके से जाता है टिपिकली, या तो फिर वो ट्रक से जाएगा या तो फिर वो ट्रेन से जाएगा, जिसे हम रेक बोलते हैं। तो रेक में का लोडिंग, ट्रक को लोडिंग, उसका इन्वॉइसिंग, कस्टमर के साथ कनेक्शन, माल जब उसके गेट पर रिसीव होगा तो उसका जो ज्वाइन करना है वो सारा हम करते हैं। सो ERP के साथ भी आप उसको इंटीग्रेट कर देते हैं? यस, बिकॉज जब वो कस्टमर जो माइनिंग जहाँ पे हुआ है वो तो बिल भेज देगा स्टील प्लांट को, समझ गए। बट जब वो वहाँ पे रिसीव होगा उसके साथ में कितना ट्रक आया, कितना रेक आया, रेक में कितना माल आया, क्वांटिटी आया, कम आया, ज्यादा आया, कम आया, ज्यादा आया, वो सब जो स्टॉक करता है, ये सब आप ऑटोमेट करते हैं? सब ऑटोमेटिक। सर एक फाइनल प्रश्न जो कि मैंने प्रभाव सर से भी पूछा था, एक नॉर्मल EPC कंपनी से आप कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं? क्यों लगता है आपको डिफरेंशिएट है? आई होप आप 20-30 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन में। मेरे को भी साढ़े तीन डेकेड हो गया। 3.5 डेकेड। तो अभी इसमें क्या है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट रहता है टिपिकली स्टील प्लांट में, उसका इलेक्ट्रिकल रहता है, इलेक्ट्रिकल में मीडियम वोल्ट से लेके लो वोल्टेज तक रहता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में हर एक चीज रहता है, ऑटोमेशन में हर एक रहता है। ऐसा एक वेंडर जो कि सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, वो सब एक साथ इकट्ठे कर सकता है। कस्टमर को सिर्फ एक ही कंपनी चाहिए, दैट इज व्हाट लीपफ्रॉग स्पेशलाइज करता है। अदरवाइज उसे 10 वेंडर के पास 10 काम के लिए जाना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिकल अलग से लेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन अलग से लेगा, ऑटोमेशन से अलग से लेगा, कंसल्टेंट को बोलेगा कि इन सबको कैसे मिलाएंगे, उसके कॉन्ट्रैक्टर अलग रहेगा, कस्टमर खुद इन्वॉल्व रहेगा कि ये सबको मिला करके जो है ऑटोमेशन तक माल ये सब इंटीग्रेट करना है। हमारे हिसाब से हम अगर हमको एंगेज करने से हमको किसी की भी जरूरत नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने डिटेल में हमें समझाया और क्लैरिटी दी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। So we spoke to Bhaskar ji, sir. Before we end this discussion, one final question to you. I mean, since you have become, now you will become a listed company and the shareholder base will increase and you have a large investor base. Right. The investor always wants to know about the future vision and what is the goal of the company, and where, if I have to ask you in next 3 to 5 years, where do you see Leapfrog? What will you answer, sir? See, where I see Leapfrog 5 years hence from now, I would not like to put a number, but I would definitely like to say that the vision of the company in next 5 years is to become the technology service provider from a pure EPC player. And there's a lot of effort that is being put by the team over here. We are working on solutions which are completely bespoke, modular in nature, and lot of effort is being put by our team and being marketed to the. We have already seen these ideas being marketed and getting converted into orders. To give you one example, one of the large orders that we picked up was from a Chinese EPC in Kuwait. Oh. Okay, and that was a. So the Chinese gave you the business. Chinese gave us the business. The fact that we could sell that particular concept was because of our complete modular solutions structure, and that came as a surprise to us, because a Chinese company would normally not give any order to an Indian EPC. So yes, we would like to be a technology company 5 years hence from here, and people would want
I would want people to remember Leapfrog as a technology company rather than a pure EPC company. So you'll be pivoting from the existing business. Will that be right? Yes, absolutely, absolutely. That be a gradual shift in the way we will start positioning ourselves. And you have already started doing this. We have already started doing it, and I mean, we are already seeing customers talking to us in that same language. So is this a trend that the EPC industry is as a whole is going to see? Not really. The transformation? Not really. I mean, we have evolved on this particular concept because we see that pure EPC players will have difficulties going forward now, not because of the lack of engineering capabilities. The execution will become that much difficult because of the lack of labor being available, rather than the engineering capabilities. So it is always a good idea to be a technology company where the customers will come to us searching for that solution. So it will be more of a technology application oriented company. So thank you for your time. I mean, you answered all our questions in detail and you took all the questions. All the best from us and from our viewers. Thank you, Vishnu. It was a pleasure meeting you. Thank you very much. Thank you. तो दोस्तों ये थे प्रभव राव जी और हम बात कर रहे थे लीपफ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी बिजनेस के बारे में। फिर मिलते एक नई कंपनी और नए शहर से, तब तक अलविदा, खुश रहिए, नमस्कार।